Hello, ladies and gentlemen. This is Behram Kazi from Grassroots Cricket reporting live from the National Bank Cricket Arena in Karachi. I've got an English fan here with me. Sir, what's your name? My name's Daniel. Daniel, lovely meeting you, and I hope that Pakistan is treating you well thus far. Of course, everyone's been really friendly. It's been brilliant. Lovely. And have you dabbled in Pakistani cuisine at all? For the first couple of weeks, all I ate was Pakistani food. I'm a bit over it now, but it gets a bit too much on the stomach after a couple of weeks, but it is lovely. Right, and what was your favorite item? I like the chicken kebab things. Bati, is it booty or something like that? Okay. It's called. They're really good. And like a dubiata or something like that as well. All right, and I see you're part of the Barmy Army, and you've probably experienced fans from all across the globe. So how do Pakistan fans compare to them? In terms of the welcome that we had, they're probably the most friendly. So the top of the list in that respect, yeah. Lovely. And ever since Brendan McCullum has taken over as England's Test coach and Ben Stokes has taken over the Test captaincy, we've seen them revolutionize the way England play Test cricket. Everyone is coining it as Bazball. Not just their belligerent batting approach on display, but also their brave declarations, forcing results and playing very result-oriented cricket. So what do you make of Bazball, and do you think it's a sustainable model? So far, it's sustainable. I believe they've won out 8 out of 9 tests since its inception. So we'll have to say it's sustainable so far. And what do I make of it? Well, it's brilliant, isn't it? It's what every fan wants to watch. Attacking cricket, win or lose. Hopefully, there are only 2 outcomes. And that declaration in Rawalpindi, yeah, fantastic. With the new mindset, a lot of England fans seen that coming a mile off. I thought we probably batted a bit longer than we needed to. But yeah, brilliant to watch all around. Yeah, absolutely. And Harry Brook has looked super impressive on tour. He scored 2 consecutive hundreds in the first 2 tests and is now looking really good in this one in Karachi as well. So what do you make of England's young sensation? He seems to be taking hold of Bazball, and he's batting very freely. And he's been given a free license to go out there and hit any ball he wants for 4 or 6. And he seems to be taking to it fantastically. I think he started playing one-day cricket and he's played in the PSL as well. Yep. So he's used to Pakistani conditions. But yeah, he's been a very good prospect for England in the future. Similarly, Rehan Ahmed has made his Test match debut in this Test, becoming the youngest English cricketer to feature in Test cricket. What have you made of his debut so far? He's been very good as well. He's put the ball in the right areas and he's gave himself a chance. England, with their approach, they don't want to get one of those good balls that he bowls, so they're trying to play a bit more attacking minded to him, and it gives Ahmed a bit more chance to get those wickets as well. But yeah, putting the ball in the right areas, it gives himself every chance to be a very good cricketer. Yeah, he has a lot of time to learn, and on the same sort of note, one cricketer is ending his career in this Test match. It's Azhar Ali's last Test, his 97th for Pakistan. What would you like to say about Azhar's career? He's had a fantastic career. I'm not sure he'd be too happy about the way he got out in the first innings. Not one of the best wickets to go down in your final Test. But yeah, he's been a standout player for Pakistan over the years. So I wish him the best of luck with his future. Yes, and that dismissal in particular, a lot of Pakistan batters have been strangled down the leg side. Yeah. Do you think that's been one of England's tactics that has really worked this series? I think they've tried to use the pace of wood, haven't they? When wickets haven't been coming in to the traditional bowlers. So they've definitely used it. It's not one that they would like to go to straight away, but if the pitch isn't doing anything, then it's something they've got to try and do. Right, and Azhar Ahmed has also made his debut in this Test series, took 11 wickets in his first games. Do you like what you see with respect to him? Yeah. All the young Pakistanis are looking very good at the moment, yeah. Perfect. And just on a closing note, who are your favourite players from both Pakistan and England? Well, I got to go for Barbar for Pakistan. And my favourite player for England at the moment, it's always Joe Root, so it's got to be Joe Root. Right. Got a duck today, so we wish that Joe gets a few more runs. In the second innings. Yes, exactly, in the second innings. Well, thank you so much for your time. It was an absolute pleasure, and I hope you enjoy the remainder of your trip in Pakistan. Thank you very much. Cheers. मेरे साथ 2 पाकिस्तान फैंस इस वक्त मौजूद हैं. क्या नाम है आपके? मोहम्मद फरहान इब्राहिम, आप लोगों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई. इंग्लैंड 17 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट खेलने आई है और कराची में इस वक्त टेस्ट हो रहा है. कैसा महसूस कर रहे हो आप लोग? इट्स बीन प्लेजर. लास्ट टाइम मुझे याद है 2005 में जो सीरीज़ हुई थी जिसमें काफ़ी इवनिंग टाइम पे सेशन ख़त्म हुए थे, तो उस वक्त मार्कस ट्रेस्कॉथिक थे, आपके हार्मिशन थे, तो वो भी बड़ा रिकॉल हो रहा है और मज़ा आ रहा है इस वक्त. जो रूट और बैन स्ट्रोक की जो बेसबॉल क्रिकेट है वो टेस्ट क्रिकेट को रिवाइवल करने के लिए, तो आई थिंक बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे जी. और दैट वाज द बेस्ट टूर जो कि इंग्लैंड ने किया था लास्ट टाइम. आई थिंक वो शोएब अख्तर भी था उस ज़माने में, और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग वाज एट इट्स पीक एट दैट टाइम. और
विंटर्स का ही मौसम था, याद है मुझे कराची में वनडे हम लोग खेले थे और वो जीते थे, तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी दैट आई हैव कमिंग टू द स्टेडियम एंड वाचिंग द मैच. सो या एंड प्लस पाकिस्तान की क्रिकेट रिवाइवल के हवाले से जो इंग्लैंड की बामी आर्मी आई हुई है, सो उनको एज अ गेस्ट के तौर पे हम लोग वेलकम करते हैं एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव देम ओवर इन पाकिस्तान, स्पेशली इन कराची. सो या Are you guys enjoying the tunes जो बार्मी आर्मी बजा रही है अपने ट्रम्पेट Definitely, पे? definitely we are enjoying it. yeah, that is the highlight of, I think that is the highlight and something which is keeping everyone awake in the stadium. सही. अच्छा, Azhar Ali is playing his final test match. He's played 97 test matches for Pakistan और बहुत ही उनका एक illustrious career रहा है. 12 साल खेलते रहे हैं वो. नंबर 3 पे बैटिंग की है ज़्यादातर और 42 की एवरेज भी है. So what would you like to say about Azhar and his career? आई विश कि वो 100 टेस्ट खेलते पाकिस्तान के और उनकी ट्रिपल सेंचुरी भी, और उस वक्त जो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका में जो शारजा में फास्टेस्ट चेस किया था +300, सो उनके अंदर भी उनका काफ़ी बड़ा रोल था और काफ़ी अच्छी इनिंग्स जो है उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेली है. सो हम उनकी जो सेकेंड इनिंग है उसके बाद उसके लिए बेस्ट ऑफ लक कहेंगे. जी और आप? Azhar Ali, I think one of the most underrated batsmen in the Pakistan cricket. जो कि जिस वक्त वो आया था पाकिस्तान टीम में, वी वर अंडर अ लॉट ऑफ क्राइसिस एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ ऑल द स्कैंडल्स एंड एवरीथिंग, बट द वे ही हैज़ प्लेड एंड कैरिड हिमसेल्फ विदाउट, आई मीन द इंटेग्रिटी, और जिस तरह उसने अपने आप को कैरी किया है विदाउट एनी स्कैंडल्स, और बेहतरीन किस्म का उसने उसका इलस्ट्रियस कैरियर रहा है थ्रू आउट इन 12-13 सालों में, एंड वी रियली enjoyed seeing him in the middle order and we'll miss him in future and best of luck for his future endeavors. Absolutely, and we've seen 2 leg spinners make their debut in this test series. अबरार अहमद ने पिछले मैच में डेब्यू किया, 11 विकेटें ली. रेहान अहमद ने इस मैच में डेब्यू किया और 2 विकेटें ली पहली इनिंग्स में. really good googly to dismiss फहीम अशरफ. तो इन दोनों स्पिनर्स के बारे में आप लोगों की क्या राय है? रेहान अहमद तो फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट है इंग्लैंड के लिए काफ़ी, और फॉर दैट इस वक्त काफ़ी इनिशियल स्टेज है तो वी कांट से एनीथिंग, बट होपफुली इन द कमिंग ईयर्स ही विल बी वेरी मैच्योर, और ये काफ़ी इंग्लैंड के लिए आदिल रशीद का एक जो है वो अल्टरनेट इनको मिल गया है और टेस्ट क्रिकेट में, तो होपफुली ही विल बी डूइंग समथिंग अमेजिंग फॉर देम. I would like to comment on Abrar. I think it's a message for the world to watch out Abrar in the coming T20 World Cup. He would be a sensation and he would be one of the best leg spinners if he played longer for Pakistan. So he would turn out to be one of the best, inshallah. Yeah, well, he has been picked up by Islamabad United in the PSL, so let's hope he gets some T20 cricket experience as well. अच्छा, मुझे ये बताते चलें कि इंग्लैंड ने जिस तरह अपनी पूरी टेस्ट क्रिकेट रीवैम्प कर दी है. Ever since Brendan McCullum has taken over as test coach and Ben Stokes has come in as test captain, they've adopted a very aggressive style of play which everyone is coining as Baz ball. ना सिर्फ ये आकर बहुत ही कोई belligerent बैटिंग करते हैं, बल्कि इनकी brave declarations भी हमने देखी, जिस तरह रावलपिंडी में फोर्स किया रिजल्ट को, रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेल रहे हैं. इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या आप पाकिस्तान को समझते हैं इस तरह ही खेलना चाहिए या अपना कोई तरीका ढूंढना चाहिए खेलने का? लाइक 9 out of 8 विन है उनकी, और तो नंबर स्पीक्स देमसेल्व्स. तो जैसी भी अप्रोच है तो नंबर्स उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव है. तो उम्मीद है कि टेस्ट क्रिकेट का रिवैम्प आप जैसे कह रहे हैं, तो होपफुली कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हों इस तरफ, क्योंकि 5 डेज़ के लिए जो है वो लोग जो है वो प्रिफर करते हैं शॉर्ट फॉर्मेट के लिए. तो टेस्ट क्रिकेट का एक अपना चार्म है, एक अपना मज़ा है. 1 सेशन उनकी तरफ है, 1 सेशन आपकी तरफ है, स्ट्रेटजी वाइज आप क्या करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्ट क्रिकेट. सो हमें ज़रूरत है या नहीं वो मैनेजमेंट को डिसाइड करेगी, बट इनकी अप्रोच भी अपनी तरफ से कि टेस्ट क्रिकेट की एक चल रही है जिस तरह खेल रहे हैं. और अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट टेस्ट मैच था प्रॉबेबली वो दोनों साइड पे जा सकता था, लेकिन मुल्तान में इन्होंने काफ़ी अच्छा खेला था इंग्लैंड की तरफ. तो ठीक है, जैसे खेल रहे हैं वो भी सही है. ठीक है. और आपकी कोई राय? I would say Pakistan should have their own brand of cricket rather than copying someone. I mean, हम लोग अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलें, उससे ये हमें फ़ायदा होगा कि एटलीस्ट हम जो भी चीज़ कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड इज़ प्लेइंग जो क्रिकेट T20 की क्रिकेट है उसी को वो कॉपी करके आई थिंक दे आर ब्रिंगिंग इट इनटू टेस्ट मैच क्रिकेट टू मेक इट मोर एक्साइटिंग. आई नो इट्स अ 5-day गेम, इट गेट्स बोरिंग इन द मिडल एंड देन आई मीन इट गोज सेशन टू सेशन. बट आई वुड से कि पाकिस्तान, आई मीन हमारा जो अपना क्रिकेट है हम उसको बेहतर है, उसी को फॉर्मेट को मज़ीद इम्प्रोवाइज़ करके बेहतर करके अपने आप को लेकर आएँ, रादर हम कॉपी करें. तो आई मीन इट वुड बी फ्रूटफुल एट टाइम्स, बट इट वुड गिव यू रिजल्ट्स एज वेल. इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट. आई मीन इट वॉज अ वेरी ब्रेव declaration from Ben Stokes in the last match, and yeah, it was fruitful as well. I mean, it gave you result. It makes the test cricket more exciting. Within 4 days you got a result. I mean, ऐसी विकेट पे जहाँ पर आप 5 दिन भी खेल सकते थे, खड़े रहते और ड्रॉ भी हो सकता था, बट their mindset, their approach gave us a result.
So yeah, I mean it could be mix and match of both. Pakistan cricket team अभी is in a transitional phase. I think हम लोग T20 के लड़कों को भी, but I would negate that कि हम T20 के लड़कों को उठा के एकदम लिए हैं. As long as we give respect to the domestic players, I mean we've got a long list of it. I can keep on going on. Abrar is one of example. So yeah, Abrar is one of them, right? Example. Because he has played under his belt there is a lot of domestic cricket. 1-2-3 साल की जो क्रिकेट है उसके बाद वो नरिश हो गया है, groomed हो गया है, तो वहाँ से लेकर आए. उस्मान सलाउद्दीन इज़ एन एग्जाम्पल, फवाद आलम इज़ एन एग्जाम्पल. आई मीन फॉरगेट दैट कि उसने परफॉर्म किया नहीं किया. आपका मीर हमज़ा है, मोहम्मद अब्बास है, आपके पास साहिबजादा फरहान है, साइम अयूब. आई मीन दीज आर द प्लेयर्स जिनको आप लेकर आए. गिव देम रिस्पेक्ट, लेट देम प्ले. अबरार आया. अबरार इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट टू द डोमेस्टिक प्लेयर. ही केम, he performed. सही. क्योंकि वो एक सिस्टम में से आया हुआ, 4 दिन की क्रिकेट खेला हुआ है. हारिस राउफ इज अ बेहतरीन टैलेंट, बट द थिंग इज ही इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस पार्ट ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ अ गेम. सो इट्स बेटर दैट वी ब्रिंग जो जिस फॉर्मेट का प्लेयर है उसको वहाँ पे लेकर आए और उसको खिलाएं. सही सही. अच्छा, मुझे इस मैच के बारे में बताते चलें कि लंच पे इंग्लैंड आर 140 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, स्टिल 166 रन्स बिहाइंड पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग्स टोटल. तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए कितने तक रिस्ट्रिक्ट करना होगा इंग्लैंड को? Probably like 50-60 अगर डेफिसिट मिलता है, सो फ्रॉम देम पाकिस्तान जो है वो अपना 300-350 अगर टारगेट देता है, सो दैट विल बी अ रिजल्ट ओरिएंटेड. सही. I think a lead of 80 to 100 runs for Pakistan would be extremely good, knowing the fact that the pitch is spinning and gripping. So I think somewhere around 250 से 300 run, 250 or 300 runs on this track on a 4th day with Abrar and Noman, I think we'll be able to overcome the England team. ठीक. Do you think that Pakistan are like 50 to 100 runs short in the first innings? Probably, yeah. No, I don't think so. I think they're at par. I mean, we can easily get England bundle out for 250 or so if we bowl the way we did in the first session. So yeah, we can get them. And a lead around 300 would be great on the 4th day for England to chase. ठीक हो गया. अच्छा, we've seen that Pakistan have been hit by injuries. बहुत ज़्यादा players injury का bias बने, जैसे कि शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह and now even इमामुल हक. क्या इससे पाकिस्तान टीम को धचका लगे? मेरे ख्याल से इनका लोड मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा देखना होगा मैनेजमेंट को. आप एक ही फास्ट बॉलर जो होते हैं वो आप तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं, उनका लोड मैनेजमेंट करना होगा कि कौन सी सीरीज़ आपके लिए प्रायोरिटी है, उसके हिसाब से उनको जो है वो यूटिलाइज़ करना होगा, ताकि हम आप ऑप्टिमम रिजल्ट जो है वो आप एक्वायर करना चाह रहे हैं, तो ओबियसली आपकी मैनेजमेंट जो है वहाँ पे प्लेयर्स को जो है वो ज़्यादा देखना पड़ेगा. मैं सही. Yeah, it is always a setback to get players injured and out of the tournament. But on the contrary, it's a chance for those who are on the bench or who are warming the bench to get a match under their belt. So it's always a chance for the other people to pick it up and make the most of it. So yeah, it is a setback, but still, I mean, I would say it's good for the other players. I mean, so it doesn't really matter. ठीक है. अच्छा, जाते जाते आप दोनों ये बताते चलें कि आप दोनों के फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं, both from England and from Pakistan? Mark Wood from England, and from Pakistan obviously the one and only Babar Azhar. सही. I would say Jimmy James Anderson. Irreplaceable. I mean, what a class, what a master, what a talent he is. At the age of 40, he's bowling like a 30-year-old. So yeah, I mean, for me, he is the benchmark for the entire teams, both the teams, or any player in the world. That is how you keep yourself fit and keep going for more than 20 years. I mean, I still remember that 2003 World Cup match where he bowled Mohammad Yusuf. Wow, that was one of the best. I mean, peach of a delivery, you could say. I mean, I haven't seen that kind of a bowling in any match, and at that too in the World Cup, it was phenomenal stuff. What about Pakistan? I would say Babar Azam. I mean, just as a batsman, not as a captain. Only as a batsman, I would be like he's a good batsman, but not a brave captain. Or I mean, the captaincy comes naturally or inbuilt to you. I mean, it's not like leaders can't be made. I mean, it's an inborn talent. Talk about Imran Khan or any other leader. I mean, yeah. Do you want to add anything to that? Do you think Babar is a good captain? Captain के लिए obviously shorter format के लिए he's brilliant. For the long term, for the Test cricket, I think there could be another option we can have for the Test cricket. Who can be very brave, who can take decisions. So कौन है आपके दिमाग में option? कौन replace करेगा बाबर को? I mean, आपके जो अब
देख सकते हैं आप बैट्समैन का आपका कौन सा मिडिल ऑर्डर, असल में बात यही कि कंसिस्टेंसी हमारी जो मिडिल ऑर्डर के अंदर है, जो एज ऑलराउंडर आपका कोई हो इस तरह का जो कंसिस्टेंट हो, तो उसको हम बना सकते हैं उसके लिए। चलिए सही, आप दोनों से बात करके बहुत खुशी हुई। गो एंड एंजॉय द टेस्ट मैच, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर। या चीयर्स। मेरे साथ एक और पाकिस्तान के फैन इस वक्त मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोज़ी अकबर। रोजी, आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। इंग्लैंड 17 साल बाद पाकिस्तान आई है टेस्ट क्रिकेट खेलने, और इधर कराची में टेस्ट मैच हो रहा है, आप विटनेस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ। हमारे मुल्क में ये क्रिकेट होना चाहिए, इससे हमारा जो है ना मतलब बिजनेस भी बढ़ेगा, एंजॉय भी होगा, मतलब सब कुछ होगा, क्रिकेट होनी चाहिए। सही सही सही। अच्छा, अजहर अली जो है 97 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, उनका आखिरी टेस्ट मैच चल रहा है, 12 साल से पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। उनकी करियर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? करियर तो उनका इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन मुल्क के लिए खेला है, मतलब जो भी खेला है अच्छा खेला है। अभी उसका रिटायरमेंट हो रहा है, तो हम बड़ी बाइज़्ज़त तरीके से उसको रुख़्सत करेंगे। इससे हमारे नए यंग खिलाड़ी को मौका मिलेगा टीम में आने का। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो दूसरा खिलाड़ी इनकी जगह आएगा वो भी अच्छी कारकर्दगी दिखाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। अच्छा, यंग खिलाड़ियों की बात करते हुए 2 डेब्यूटेंट्स देखे हमने इस सीरीज़ के अंदर। स्पिनर पाकिस्तान की तरफ से अबरार अहमद और इंग्लैंड की तरफ से रेहान अहमद। अबरार ने तो अपने पहले मैच में 11 विकेटें भी ली मुल्तान के अंदर। तो इन दोनों के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी बात सही है। ये जो हमारे इब्रार अहमद आया हुआ है, स्पिनर बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन इन्हों का मदद मतलब इनका हेल्प करने के लिए बैट्समैनों को अच्छी कारकर्दगी दिखानी होगी। इस वजह से हमारी टीम स्ट्रॉन्ग होगी। ये हमारे मुल्क का सासा है, आगे जाकर ये और भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा, हम उम्मीद रखते हैं। सही सही। और इंग्लैंड के कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप देखना चाह रहे हैं खेलते हुए? इंग्लैंड का ये जो कैप्टन है इसका, ये भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, मतलब बैट्समैन को बहुत अच्छे है। अच्छा अच्छा। हाँ, और जिस अंदाज से अपनी क्रिकेट खेलते हैं, आकर जारहाना स्ट्रोक प्ले का मुजाहरा करते हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपकी बात सही है। ऐसी क्रिकेट मतलब टेस्ट में होनी चाहिए। इससे ये कि पब्लिक भी आएगी, मैच ड्रॉ भी नहीं होगा। आवाम चाहते हैं कि मैच का रिजल्ट आए, तो इस वजह से ये क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रही है। क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान भी इस तरह की क्रिकेट खेले, या वो अपने तरीके से क्रिकेट खेलें? पाकिस्तान तो इस तरीके से हमारे जो बैट्समैन है उन्हों का माइंड जो है ना सेट नहीं होता है। वो कभी तेज़ खेलते हैं, कभी स्लो खेलते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो हमारे ख्याल से ऐसे ही खेलना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से जैसे इंग्लैंड वाले खेल रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। और आप ये भी बताते चलें कि आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं, पाकिस्तान से भी और इंग्लैंड से भी? पाकिस्तान से तो मेरा बाबर आजम है, बहुत अच्छा प्लेयर है, और इंग्लैंड से इनका कप्तान जो है। अच्छा जी। और पाकिस्तान ने इस वक्त 4 विकेटें गिरा दी इंग्लैंड की लंच पे, और 140 इंग्लैंड का स्कोर है। 166 रन अभी भी वो पीछे हैं पाकिस्तान के फर्स्ट इनिंग स्कोर से। कितना आपको लगता है कि पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इंग्लैंड को, कितने रन में आउट करना पड़ेगा मैच जीतने के लिए? तकरीबन 300 के अंदर आउट करना पड़ेगा। अगर बाद में अगर वो बैटिंग भी करे, हमको 300 टारगेट भी दे, मतलब 250-300 के दरमियान, तो इस दफ़ा तो हम हमारे बैट्समैन को चेस करना चाहिए। 2 दफ़ा तो हम पीछे रहे, लेकिन इस दफ़ा तो चेस करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाबर आजम की कप्तानी जो है उसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है, आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्या बाबर को कंटिन्यू करना चाहिए एज टेस्ट कैप्टन? बाबर आजम को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। वो एज ए बैट्समैन जो है ना सही है। उनका तजर्बा जो है ना, उनका ऐसा कोई रोल नज़र नहीं आ रहा है। मतलब टीम में अभी जैसे देखो, इंग्लैंड ने जो हमसे 2 मैच जीता है, रिस्क लेकर जीता है। उनको कैप्टनी का आपने अंदाज़ा किया होगा, तो इसलिए बाबर आजम में कैप्टनी वाली वो खास बात नहीं है। सही सही। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जाकर मैच एंजॉय करें, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू। I've got another English fan over here with me from the Barmy Army. Sir, what's your name? David, David, it's a pleasure to meet you. I hope Pakistan has treated you well thus far. unbelievable experience so far. Really? It's great how we're all sitting together, and they love the trumpet that we're doing and our songs that we're doing, and you know, it's a wonderful experience. Yeah, well, we're loving to have you over here. It's an absolute honor to host you. And have you dabbled in Pakistani cuisine at all? We remember in England there's a big immigrant community, so for us it's our part of our regular diet. Right. So what's your favorite item then? Anything with chicken curries, with lamb curries, just regular. All right. It's not like it's not foreign food for us. All right, so you're part of the Barmy Army, and I take it that you've experienced fans from across the globe. Yes. How do Pakistan fans compare to them? I wish there were more of you here. If we had 30,000 here and the stadium was full, England would be scared. So get your friends and family to come and there, and you might have 3 more wickets this morning. Honestly, it's the truth. And No it's a doubt. shame. And the only comment is security because of the history. Remember, it took a long time for us to come back. Security is so tight, it means it doesn't encourage the locals to come as much. That just... Perhaps that's Whether one of I'm the right reasons. or wrong, I have no idea, but it's just an opinion.
Right, so England are 140 for the loss of 4 wickets at lunch. How many do you think they need to pose a challenge and whitewash Pakistan 3-0 in this series? Depends what mood Ben's in. He seems to be very grown up today, and if Ben's grown up, it's more dangerous than if he's just going crazy. So if all the batsmen have been successful before, he normally goes mad, and if he's needed, like in the World Cup final against you, he had the slowest ever T20 50, right? And that's why you lost, not because he was bish, 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 bash, bosh, yeah? You lost because it's true. Fair enough. Yeah. What do you make of Harry Brook? He's had a sensational start to his test career, got back-to-back hundreds in Rawalpindi and Multan, and he's looking really, really good over here in Karachi. So what's your take on England's young batting sensation? Do you know anyone else at 23 who's won a World Cup and the third fastest 100 in history? Yeah, fair point. What about Rehan Ahmed? He's made his debut in this game, got 2 wickets yesterday. Do you like what you see over there? He was great. He had a really scary start. He was obviously very nervous. But what a quick learner. Incredible. I mean, your guy, where did he come from? Abrar? Where did... I think he's a local. He's from Karachi, originally from somewhere else, but he plays his cricket over here in Karachi. Well, it's the same thing, isn't it? Yeah, you like what you see with Abrar? No, because I'm English and it's scary. I mean, obviously scary, and you're not, again, you had another spinner who's doing really well today. So maybe if the selections were different, with those 2 spinners you had today and Shahid was fit, it could well have been a different series. Yeah, very well. And also, Azhar Ali is playing his final test match, his 97th test over I here. remember here, Yeah, 12 years he served Pakistan and batted at first drop. Would you like to say anything about his career? Not, you don't want me to lie, so my knowledge isn't great. Obviously we saw him in the World Cup in 2019. We played a lot of test matches with you during COVID and the 7-match one-day series and all of that. So he's obviously been there for a long time and been a mainstay. And I hope you replace him. There we go. Yeah, all right. And with respect to baseball, ever since Ben Stokes has taken up the test captaincy of the English team and Brendan McCullum has taken over as test coach, they've completely revamped the way they go about their cricket. And not just with their aggressive stroke play, but also with their brave declarations. So what do you make of baseball, and do you think it's a sustainable model? Well, the thing is, if you look at it today, it wasn't crazy. Yes, we hit a couple of sixes, but it was very sensible batting today, and we didn't attack every ball. But still we went up 4.5, 5 and over. I mean, which is incredible considering it didn't look like that. And you look at the scoreboard and we suddenly got 140 runs in 28 overs. Yeah. Wow. Yeah, absolutely. And just on a closing note, who are your favorite players from both England and Pakistan? Well, Bubba's the hero, isn't he? When him and Rizwan did those opening partnerships, they were in the mood. No one could touch you. But it just shows the sport how difficult it is to do every single time. Absolutely. And what about England? Root, Anderson, Stokes, where do I start? Yeah, awesome. Well, it was I was lovely. very lucky. I was at the 2019 World Cup final. Oh, You wow. know, That was one hell of a game. Perhaps the best ODI game of all We time. probably didn't deserve to win it. Oh, well, But sport that is a funny shows thing. you the luck. But don't be shocked when you lose or win. If Bolt hadn't... Well, 2 things happened. He caught it and he hit the line, and then a deflection. And then without those things, we didn't win. Yeah, Which means well, we probably shouldn't have. you still are the world champions in both ODI and T20 The cricket T20 currently. we deserved it. T20 we deserved it. But anyway, have a lovely day. It was an absolute pleasure speaking to you, and I hope you have a wonderful remainder of your trip in Pakistan. Thank you very much. Thank you so much. Cheers. bless. मेरे साथ कुछ पाकिस्तान फैंस इधर मौजूद हैं. क्या नाम है आपके? मोहम्मद वकास। और आपका? ठीक है। और इंग्लैंड जो है 17 साल बाद पाकिस्तान का टूर करी है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, और इधर कराची में आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हैं इंग्लैंड को. कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और बहुत बड़े अरसे बाद जो एक बड़ी टीम पाकिस्तान आई है तो एक हमारे लिए प्राउड भी हम फील कर रहे हैं कि बड़ी टीमें आ रही हैं, तो आइंदा सालों में जो है इधर कब भी मुनक़द हो सकते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए जो है। सही है। और इस वक्त इंग्लैंड का जो स्कोर है वो है 140 रन 4 विकेटों के नुकसान पे. तो ये बताते चले कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को कितने स्कोर पे इनको रिस्ट्रिक्ट करना होगा अगर पाकिस्तान ये मैच जीतना चाहती है? मैक्सिमम मेरे ख्याल में 200 या अराउंड 250 तक इनको मेरे ख्याल में आउट करना चाहिए, और आज ही करना चाहिए, सेकंड डे पे. तो उम्मीद है कि पाकिस्तान जीत सकता है. और पिछले अगर मैचों से देखा जाए तो परफॉर्म अच्छा कर रहा है पाकिस्तान. एक दिन में उन्होंने 300 स्कोर कर लिया था. तो ओवरऑल
अच्छा लग रहा है, देखते हैं। सही सही। और अजहर अली का ये आखिरी टेस्ट मैच चल रहा है इस वक्त, 97 टेस्ट मैच में वो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं और 12 साल करियर के बाद अब रिटायर करने जा रहे हैं, तो उनकी करियर के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, एक अज़हर अली अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने काफ़ी ऐसे मैच जो हैं वो जितवाए हैं पाकिस्तान के लिए, तो उनको मिस करेंगे बिल्कुल। जो है एक अच्छा खिलाड़ी रहा है और अभी जो तकरीबन न्यू खिलाड़ी आए हैं वो भी अच्छे हैं। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस में देखा जाए तो एक बेहतरीन प्लेयर था जो। सही सही। नए खिलाड़ियों की बात करते हुए चले तो अबरार अहमद ने पिछले मैच में अपना डेब्यू किया, 11 विकेटें ली और इस मैच में भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं बॉल के साथ। उनके बारे में आपके कोई ख्यालात? जी बिल्कुल, वही बात आ गई ना कि अगर हम यंग्स प्लेयर को इंटर कर रहे हैं तो अगर आप पिछले कुछ मैचेस में भी परफॉर्मेंस देखें यंग्स प्लेयर की, तो वो मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि मतलब यंग प्लेयर आ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं हम भी जो है उनको। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, बाबर की कैप्टनसी पे काफ़ी तनकीद हो रही है टेस्ट क्रिकेट में, क्या आपको लगता है कि बाबर एक अच्छे कप्तान है टेस्ट क्रिकेट में या उनको रिप्लेस कर देना चाहिए? देखें अभी कुछ ही तो टेस्ट हुए हैं उसके जो है, तो मेरा ख्याल है तो उसको टाइम देना चाहिए। अच्छे प्लेयर हैं वो जो है, और ये तो थोड़े ऊंच नीच जो है वो आता रहता है, तो मेरा कहना यही है कि मज़ीद उनको जो है टाइम देना चाहिए जो है। ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान में काफ़ी जो प्लेयर्स हैं इस वक्त इंजर्ड हैं, जिस तरह शाहीन, नसीम, हारिस और अब इमामुल हक भी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को काफ़ी धचका पड़ा है इन इंजरीज़ की वजह से? बिल्कुल कह सकते हैं। शाहीन अफरीदी जो है एक अच्छे बॉलर हैं, ओवरऑल काफ़ी मतलब उनके मैचेस पीछे अच्छे गए, तो बिल्कुल फ़र्क पड़ा है। पिछले आप मैचेस देखें तो अगर शाहीन अफरीदी होते तो हो सकता है कि पाकिस्तान जीत सकता था, तो उम्मीद है जल्दी वो ठीक हो जाएं और कंटिन्यू करें। अच्छा, इंग्लैंड ने जिस तरह अपनी टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल रीवैम्प कर दी है, जब से बेन स्टोक्स उनकी टेस्ट टीम के कप्तान बने हैं और टेस्ट टीम के कोच बने ब्रेंडन मैकलम, वो बहुत ही जारहाना अंदाज से बैटिंग भी करने लग गए हैं और बहुत ब्रेव डिक्लेरेशंस भी ले रहे हैं, जिस तरह कि हमने पिंडी में देखा। तो इस सब के बारे में आपकी क्या राय है और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी इस तरह खेलना चाहिए या अपने अंदाज से खेलना चाहिए? जी बिल्कुल, देखें वो उनकी शुरू से ही क्रिकेट अच्छी रही है इंग्लैंड वालों की, और जो भी उनके प्लेयर आए हैं तो वो उनके उम्मीद पे पूरा उतरे, तो पाकिस्तान को भी उनसे कुछ मतलब सीखना चाहिए। जिस तरह वो आए हैं तो पाकिस्तान को भी काफ़ी सीखने को मिलेगा उनसे जो है। यहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, यहाँ मतलब होम ग्राउंड का यही फ़ायदा होता है कि दूसरे प्लेयर से सीखना चाहिए। जाते जाते ये मुझे बताते चाहें कि आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं, पाकिस्तान से भी और इंग्लैंड से भी? इंग्लैंड से तो यही हैं, बेन स्टोक हैं, और कुछ पहले थे तो अभी नहीं है, और पाकिस्तान से जो है बाबर आजम हैं, और एक शाहनवाज डानी था लेकिन वो अभी तो नहीं खेल रहा, लेकिन ओवरऑल अच्छे ही हैं। बेस्ट अगर कहें तो मतलब बाबर आजम अच्छे हैं। सही सही। ठीक है, आप जाकर टेस्ट मैच एंजॉय करें। आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। इट वाज माय प्लेजर। थैंक यू। And thank you viewers for tuning in. For similar content, stay tuned. Brought to you by Grassroots Cricket.